আগে ওলাই দে ड्रग्स का विरोध हमारा जो अभियान है लगातार चल रहा है और असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम राज्य को ड्रग्स मुक्त रूप में देखना चाहते हैं, उनको कोशिश रहा है। तो उस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार ये अभियान चला रहे हैं। और कल हमारा एक इनपुट मिला था, एक खबर मिला था, उस इनपुट के ऊपर काम करते हुए हम लोगों ने एक गाड़ी बाहर मतलब से आ रहा था, जो हमारा नेबरिंग स्टेट है वहाँ से आ रहा था, तो गाड़ी को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। गाड़ी है फोर्ड टाइटेनियम गाड़ी का नंबर है AS26A2522। ये गाड़ी जब हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया, वहाँ पे 3 सवारी था, एक इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो तीनों को हम लोगों ने हिरासत में लिया। एक का नाम है मिस सिनलाम, ये चुराचांदपुर के रहने वाले हैं मणिपुर से। और दूसरा महिला है मोहम्मद इलियास आबेन, ये भी चुराचांदपुर के हैं, लेकिन ये शादी हुआ है बरपेटा में। और बरपेटा का एक आदमी था शाहरुख अली, बरपेटा भेला के रहने वाले हैं। तो इन तीनों को हम लोगों ने जब इंट्रोगेट किया, इनको पूछताछ किया, और उसके पूछताछ के दौरान हम लोगों ने उस जो गाड़ी है, उस गाड़ी का स्पेशली मेड चैम्बर, वहाँ स्पेशल चैम्बर बनाया हुआ गाड़ी में, उसमें वेल्डिंग करके वहाँ से हम लोगों ने 105 सॉफ्ट केसेस, मतलब साबुन का जो केसेस हैं, उसमें केस में जो सस्पेक्टेड हीरोइंस है उसको हम लोगों ने जब्त किया। और जो पूरे 105 जो सॉफ्ट केसेस है, यहाँ पे जितना जो अमाउंट क्वांटिटी में जो हीरोइंस हम लोगों ने जब्त किया, उसका जो वजन है 1.23 किलोग्राम्स, मतलब 1 किलोग्राम से ज़्यादा है। और इसका जो मतलब जो ब्लैक मार्केट में इसका जो वैल्यू होगा आज के टाइम में, उसका मोर देन 6.5 करोड़ से, मतलब 650 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। और इसको हम लोगों ने जो इंडिपेंडेंट विटनेस के मौजूदगी में हम लोगों ने इनको सीज किया पूरे सामान को। और ड्रग डिटेक्शन किट के ज़रिए हम इसको परीक्षण किया, और उसमें हमको पॉजिटिव रिप्लाई मिला, और इमीडिएटली हम लोगों ने पूरे सामान को सीज किया। और जो गाड़ी था, जब्त किया हुआ गाड़ी था, उसको भी हम लोगों ने सीज किया। और जो तीनों जो लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तीनों लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया। और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, लॉफुल एक्शन लेने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और इसके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस है और बैकवर्ड लिंकेजेस है, उसमें भी हम लोग ने काम कर रहे हैं। जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन में चपेट में आएगा, उन लोग के ऊपर भी सख्त से सख्त लॉफुली कार्रवाई होगा। और ड्यूरिंग हमारा ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये जो सामान है, ये सामान हमारा नेबरिंग स्टेट से लाके हमारा डिस्ट्रिक्ट को एक ट्रेंडिंग पॉइंट के हिसाब से लेके बाहरी राज्य में ले जाने का उन लोग का प्रोग्राम था। तो उसको हम लोगों को इनपुट मिला, इनपुट मिलने के बाद हम लोग उसको कार्रवाई किया, और पूरे जो सामान है इसको हम लोगों ने जब्त किया। और हमारा ये जो अभियान है ड्रग्स के विरुद्ध, जो हमारा वार अगेंस्ट ड्रग्स है, ये लगातार हमारा चलते रहेगा। जब तक हमारा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग ड्रग्स मुक्त नहीं कर पाते, हमारा ये अभियान कंटिन्यू होगा। ड्रग्स বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। আৰু এই অভিযানৰ এক অংশ স্বৰূপে যোৱা কালি আমি এটা বিশেষ অভিযান এই সংক্ৰান্তত আমি চলাইছিলোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তত আমাৰ শিলচৰ বাইপাছত এই অভিযান চলিছিলে। আৰু অভিযান কালত আমি এখন গাড়ীখন হ'ল ফৰ্ড টাইটেনিয়াম। এই গাড়ীখন 3 দিনৰ পূৰ্বে চুৰাচান্দপুৰৰ মণিপুৰৰ পৰা ৰাওনা হৈছিলে। আৰু সেই গাড়ীখন আমি বিশেষ খবৰ সূত্ৰে আমি সেই গাড়ীখনক ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ। আৰু ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি আমি যেতিয়া গাড়ীখনত 3জন ব্যক্তিক আমি গাড়ীখনত তেওঁলোকে আহিছিলে, আৰু 3জন ব্যক্তিকে আমি আটক কৰোঁ। আৰু আটক কৰি আমি তেওঁলোকক সোধপোছ আৰম্ভ কৰোঁ। 3জন ব্যক্তিক আমি আটক কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ নাম আছিলে মিছ সিনলাম, আৰু তেওঁ বয়স 37, ৱাইফ অফ ছেশ্যন, ঘৰ হ'ল চুৰাচান্দপুৰ মণিপুৰত।
দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা আছিলে, তেওঁৰ নাম মহম্মদা এলিয়াছ এবেম, 32 বয়স, আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হ'ল শ্বাহৰুখ আলী ভেলা বৰপেটা। আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তি হ'ল শ্বাহৰুখ আলী ছান অফ ছাদেক আলী, ৰেচিডেন্স অফ ভেলা বৰপেটা। এই তিনিজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰি সোধপোছ আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু সোধপোছ কালত আমি সেই গাড়ীখনৰ পৰা বিশেষভাৱে নিৰ্মিত ছেক্ৰেট চেম্বাৰৰ পৰা আমি 105টা চাবোনৰ বাকচত সন্দেহজনকভাৱে হিৰোইন কঢ়িয়াই লৈ যোৱা অৱস্থাত আমি 105টা চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু জব্দ কৰাৰ পাছত আমাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ পথে আৰু পৰীক্ষণৰ পালত সম্পূৰ্ণৰূপে পজিটিভ ৰিপ্লাই পোৱাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি আইনৰ মতে আমি চিজ কৰোঁ, আৰু তাক যাৱতীয় পৰীক্ষণৰ বাবে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে যিখিনি কৰিব লাগে মাননীয় আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আমি তৎপৰ হওঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তে আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু এই 105টা যি চাবোনৰ বাকচ আছিলে, এই চাবোনৰ বাকচত যি সামগ্ৰী, নিচাযুক্ত সামগ্ৰী হিৰোইন আছিলে, তাৰ ওজন 1.23 কিলোগ্ৰাম, মানে 1 কেজিতকৈ বেছি ইয়াত আমি হিৰোইন নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ যি মূল্য, ই 6.5 কোটিতকৈ অধিক হ'ব। গতিকে আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰি আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কালত যিটো আমি ফ'ৰ্ড টাইটেনিয়াম গাড়ী আমি জব্দ কৰিছিলোঁ, সেই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS26A2522। সেই গাড়ীখনকো আমি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি এইটো আমি জব্দ কৰোঁ বা চিজ কৰোঁ। আৰু গোটেইখিনি যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াত আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ যি উপস্থিতিত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি চিজ কৰোঁ। আৰু আমি জোৰ তদন্ত আৰু চলাই গৈছোঁ যে ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থকা আপৱাৰ্ড লিংকেজ আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংকেজেছ যি আছে তাক এষ্টাব্লিছ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তকালত দেখা গৈছে যে গোটেই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে কঢ়িয়াই লৈ আহিছিলে, আৰু কঢ়িয়াই লৈ আহি আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি জিলাৰ এটা ট্ৰেনজিট পইণ্ট হিচাপে লৈ ইয়াৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে। গতিকে এই যি আমাৰ তদন্ত আছে, তদন্ত এতিয়াও আমাৰ অব্যাহত আছে, আৰু তেওঁলোকৰ আৰু যি তথ্য আমি এই মোকৰ্দমা সংক্ৰান্তত আমি ৰুজু কৰি মোকৰ্দমা সংক্ৰান্তত আমি যি লাভ কৰিম, এই সকলোবোৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম।